बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। और आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। आज हमारे साथ फरहान अहमद हैं, हु इज़ अ ट्रेडर एंड ही डील्स इन स्टॉक्स एंड शेयर्स। और वो आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या स्टॉक्स और शेयर्स क्या होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होती हैं, करेंसीज़ क्या होती हैं, गोल्ड क्या होता है, हर चीज़, और किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। नाज़रीन, आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं इन रिगार्ड्स टू स्टॉक्स एंड शेयर्स, एक जनरल एडवाइस के लिए फरहान आपको ज़रूर बताएंगे। हमारा टेलीफोन नंबर नीचे चल रहा होगा, 0208 662 4550। और आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं अपनी इंक्वायरीज के साथ। एट तो नहीं पहले कहना चाहिए, लेकिन info@ikra.tv। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, info@ikra.tv। और थैंक यू सो मच फरहान फॉर स्टेइंग विद अस एंड जॉइनिंग अस। अच्छा, हम लोग पहले तो बात कर रहे थे स्टॉक्स एंड शेयर्स की, जो कि आपने हमें एक्सप्लेन किया कि देर आर हलाल वेज ऑफ डूइंग इट एंड ऑब्वियसली देर आर अदर मीन्स एज वेल। एंड आई थिंक फॉर आर viewers, we definitely want to go the halal way. Acha, now I want to talk about currency, then I want to talk about cryptocurrency. Sure. लेकिन पहले आप हमें एक्सप्लेन करें कि करेंसी का क्या, हाउ डू पीपल ये बाइंग एंड सेलिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये किस तरह, ये हाउ डज दैट वर्क? Again, आजकल सारा ऑनलाइन होता है through ऑनलाइन अकाउंट्स एंड बिल्कुल जैसे स्टॉक मार्केट्स के अंदर आप बाय सेल कर सकते हो कंपनीज के अंदर, तो ठीक उसी तरह जो करेंसीज हैं वो आप बाय सेल कर सकते हो इन जो कहते हैं करेंसी पेयर्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने डॉलर बाय करना है तो आप खाली डॉलर नहीं बाय करेंगे। आप अगर यूरो डॉलर के साथ ट्रेड होता है, पाउंड डॉलर के साथ ट्रेड होता है। डॉलर इज़ द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। सो ऑयल, गोल्ड, हर चीज़ डॉलर के अंदर प्राइस होती है। इवन क्रिप्टो डॉलर के अंदर इज़ रिलेटेड टू डॉलर। तो आप डॉलर खरीदेंगे तो कोई और चीज़ बेचेंगे। सो जो आपके ऑनलाइन अकाउंट होंगे उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे और दो दो नाम उसके अंदर होंगे, यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप डॉलर ख़रीद रहे हैं तो कोई और चीज़ आप बेच रहे होंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाता है बाय सेल सुर के अंदर। लेकिन नॉर्मली लोग अगर कोई करेंसीज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो आप यू डू इन पेयर्स। सो डॉलर अगर यूरो के अगेंस्ट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर करेंसी पेयर। I like that a lot. बहुत कौन लिक्विड सा, करेंसी पे ऑन व्हाट? यूरो डॉलर, यूरो अगेंस्ट डॉलर। ओके, या ठीक है, ओके, यूरो अगेंस्ट तो डॉलर। अगर आप यूरो डॉलर बाय कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अपने अकाउंट के अंदर, तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, आप यूरो बाय कर रहे हैं, डॉलर सेल कर रहे हैं। सो आप स्पेकुलेट करें कि यूरो की प्राइस अप जाएगी, डॉलर की डाउन जा रही है। ऑन द रिवर्स इज ट्रू, अगर आप डॉलर खरीदना चाहते हैं तो आप यूरो सेल करेंगे। दैट्स अगर आप यूरो डॉलर के अंदर बाय सेल कर रहे हैं। तो करेंसीज बट द मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, एंड हाउ डू द मार्जिन्स वर्क एनीवे? आई मीन, किस तरह पता होता है कि ज़्यादा डॉलर की प्राइस किस तरह ऊपर जा रही है यूरो की, ओ इवन द रेस्ट ऑफ द करेंसीज, वेयर इज दैट अटैच्ड टू? Obviously it's probably, I mean, Yeah, I mean, this is what the $100 million question is कि क्या कौन सी करेंसी अप जाएगी, कौन सी करेंसी डाउन जाएगी। I mean, there are lots of different ways ये ट्रेड करने के लिए। कुछ लोग पहले हम लोग कॉल पे चलते हैं फरहान, Sure. फिर देन विल एक्सप्लेन। जी, अस्सलाम वालेकुम। Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। कौन कौन साहिबा बोल रही हैं? My name's Alina. अमीना, अस्सलाम वालेकुम अमीना जी, हुक्म। Walaikum कहाँ से बोल salam. रही हैं पहले आप ये बताएं? From East London. ओके जी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? I have a question for the gentleman. I wanted to ask, I've heard a lot about crypto, and I'm wondering how safe it is. And because there's so many different types of crypto, which one is the best crypto to invest your money in? बिल्कुल अमीना, वी विल डेफिनेटली गेट टू क्रिप्टो करेंसी। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी जस्ट डूइंग इट इन स्टेजेस। अभी ये करेंसी के बारे में, एंड देन स्ट्रेट आफ्टर दैट विल कम बैक टू यू, एंड जस्ट कीप ऑन वाचिंग द शो। और ये क्रिप्टो करेंसी की, अच्छा, योर क्वेश्चन इज कि व्हिच वन इज द बेस्ट वन? Which one is the best one, and how safe is it to Okay, trade with crypto? is the best one and how safe is it? Yeah, okay. Yeah, All right, okay. So Amina, please keep on watching. ठीक है, तो I will do. we will definitely answer your question. Definitely Thank you answer your so question. much. Thank you so much. Thank you for calling. जी जी, ये हम लोग बाद में क्वेश्चन जो है अमीना Sure. का ज़रूर आंसर करेंगे, बट
what I don't want to do is Jump हाँ, between jump topics. हाँ. हाँ. तो हम क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर I want to spend quite a substantial amount of time. It is the new thing It is the जिसके new बारे thing, में हाँ. सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है. But you're right, it is related to currencies too. तो मैं कह रहा था कि करेंसीज का ये है कि जो इकोनॉमिक हालात हैं, खासकर ये कोरोना वायरस को लेके एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स को लेके जो इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स होती हैं, करेंसीज उसके ऊपर काफ़ी सेंसिटिव होती हैं. और उसके मुताबिक अप डाउन काफ़ी जाती हैं. So it makes it a little bit, so for example stocks or shares जो हैं, you know, a company in theory can go bankrupt, लेकिन a currency जो है वो कभी ज़ीरो तक नहीं जाएगी. You know, dollar will never go to zero, euro will never go to zero, up down जाते रहते हैं. So this is the advantage of currencies. लेकिन they also are traded just like आप ट्रेड करते हो शेयर्स को. इट्स जस्ट कि वो पेयर्स के अंदर ट्रेड होती हैं. एंड एज आपका तजर्बा बढ़ता है, यू अंडरस्टैंड कि कौन से करेंसीज वो वी कॉल एग्जॉटिक पेयर्स, जो ज़्यादा ट्रेड उनके अंदर नहीं होता, तो इसीलिए उनकी जब प्राइस मूवमेंट होती है तो दे कैन जंप अप और डाउन, you know, quite a lot. और फिर you have currencies जैसे यूरो डॉलर है, पाउंड अगेंस्ट डॉलर, ये बहुत पॉपुलर करेंसीज हैं और ये काफ़ी लिक्विड करेंसीज होती हैं. तो इनके अंदर प्राइस लेना is much more easier than. And the margins must be very small. नहीं, And the decision has to be made quite quickly as well. Am I right in saying that? अगर एकदम से ऊपर गई आप बेचें एकदम, you know, you got to be on the ball. Am I right on? You have to watch it. लेकिन you know, it's not ऐसे कि, I mean, कुछ लोग, there are lots of different techniques. कुछ लोगों की टेक्निक ये होती है कि 1-2 मिनट के अंदर या 1-2 सेकंड के अंदर बाय सेल कर दें. ठीक है. लेकिन there are other ways of trading as well कि आप देखो कि fundamentals क्या हैं करेंसी के, charts आपको क्या बता रही हैं कि over sort of the last few months, the last few days, last few hours कहाँ पे जा रहा है, उसका trend किधर है. And you know, you pick के sensible trading is आप देखते हो कि मैं यहाँ पे ख़रीद रहा हूँ या मैं वेट करता हूँ कि ये यहाँ तक जाए और फिर ये ज़्यादा अच्छा प्राइस है ख़रीदने के लिए, और मैं प्लान करता हूँ कि मैं इस लेवल के ऊपर आके इसको सेल करूँगा इन एन आइडियल वर्ल्ड. और फिर वो लेवल जब आता है, यू नो, यू सेल एट दैट लेवल एंड यू हैप्पी इंस्टेड ऑफ जस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बना है, मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया. यू नो, यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग इन दैट, यू नो, ताकि आपको पता हो कि आप स्टार्ट कहाँ पे कर रहे हैं एंड वेयर यू इंटेंड टू फिनिश. अच्छा, अब now thank you so much for covering. Now we're going to get to the interesting bit. जो मीना ने क्वेश्चन भी पूछा था क्रिप्टो करेंसी का. So first of all आप हमें एक्सप्लेन करें what crypto currency is. कहाँ से आ गई एकदम से? हमने तो बिटकॉइन का सुना था एक ज़माने के अंदर, और बल्कि हमें तो लोगों ने कहा भी था बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो. उस वक्त मेरा ख्याल है $25 का था बिटकॉइन. बिल्कुल. और you know, and the idiots that we are, unfortunately we didn't. चाहे हम लोग एक ही ले लेते तो वो भी अच्छा ही हो जाता. अच्छा हो जाता. देखिए नाज़रीन, बात ये है कि क्रिप्टो जो है ऐसी है जैसे 2000s के अंदर जब ऑनलाइन कंपनीज निकली थी पहली बारी, ठीक है, और ये बिज़नेस मॉडल नया था, लोगों को समझ नहीं थी, लेकिन एक बज़ हो गया था मार्केट के अंदर कि ये .com वाली जो कंपनीज हैं इनके अंदर सारा पैसा डालो, और बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया था, बहुत सारे लोगों ने पैसा हारा भी था जब द .com बबल बस्ट. और क्रिप्टो जो है इट्स जस्ट एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेंसी. ठीक है. The biggest cryptocurrency and the most popular is Bitcoin, जैसे आपने कहा. That is one kind of cryptocurrency. बाकी Bitcoin का ये है कि Bitcoin is priced in dollars. अगर आपने Bitcoin ख़रीदा है कहीं, the value of Bitcoin is relative to the dollar. So अगर dollar, you know, kind of like crypto, ये चीज़ें ये normal financial चीज़ों से थोड़ी सी बाहर है, like a grey area, लेकिन फिर भी they are connected to it. क्रिप्टो का ये है कि बहुत सारी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं. कुछ उनके अंदर फ्रॉड होता है, कुछ यू नो बेबुनियाद होती हैं, कोई एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई टेक्नोलॉजी या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. कुछ ऐसी होती हैं जैसे बिटकॉइन, दे आर लाइक द बेलवेदर ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री. बिटकॉइन अगर डाउन जाए तो बाकी भी क्रिप्टो जो हैं दे विल फॉलो बिटकॉइन. अच्छा, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि देयर आर सम व्हिच आर नॉट, you know, there have been quite a number of frauds in cryptocurrency as well.
ठीक है, which where companies have actually bust and people have actually lost a lot of money as well. Yeah, कुछ So it's ऐसे भी actually कि- quite scary as well in Very that scary. sense. कुछ ऐसी भी हैं कि जो क्रिप्टो के फाउंडर थे वो बस डिसअपीयर हो जाते हैं लोगों के पैसे के साथ कैश करके. So it happens. और इसीलिए क्योंकि it's not a globally like regulated market. Crypto. हमारी जो नाजरीन थी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो कह रही थी कि how safe is it? कौन से वाले क्रिप्टो के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? Now इंडिविजुअल क्रिप्टो तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ. आप अगर अपना नंबर छोड़ जाएं तो हम बाद के अंदर वी कैन स्पीक ऑन अ वन टू वन बेसिस. लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो. बेस्ट चीज़ ये है जैसे स्टॉक्स एंड शेयर्स जो है ना उनके साथ भी क्रिप्टो के बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिलता है. क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा. नन ऑफ दीज क्रिप्टो एक्सचेंजेस कि रिलायबल ट्रस्टवर्दी हैं. All of these exchanges have had some problems. Do you know, I'll tell you something. Somebody actually told me something very informative. They said to me कि look, आप महीने में या हर हफ्ते अगर आप 5 पाउंड 10 पाउंड 100 पाउंड 200 पाउंड जितने भी सेव करते हैं, you first of all have to have a saving mechanism. Yes. ठीक है? But instead of putting it elsewhere, just buy Bitcoin. Yeah. And there have been people that have been doing this for the last 3, 4, 5 years that have actually made a substantial amount. छोटी-छोटी investments, छोटी-छोटी 100 investments, पाउंड, over 50 पाउंड, हर हफ्ते उन्होंने बिटकॉइन खरीद ली, ठीक है? And there are, it's made quite a nice financial difference to them. It has. It's made a lot of people very rich, and some people, the opposite. Business के अंदर ऐसे होता है, कुछ पैसे बनाते हैं, कुछ हारते हैं. Bitcoin का ये है कि क्योंकि it's unregulated. कुछ ऐसे currencies आते हैं, crypto currencies जो new होते हैं और उनके पीछे नई टेक्नोलॉजी या कोई आइडिया होता है कि जिस वजह से वो ये क्रिप्टो बना रहे हैं, ठीक है? और this information is available on the exchanges, लेकिन थोड़ा और ढूंढना पड़ता है, and it's not always 100% reliable. So cryptocurrency is not always 100% reliable. In the Not sense, all of them are. Yeah, in the sense that आपको, for example, आपको पता है कि डॉलर जो है, पाउंड जो है, जापानीज येन जो बिग करेंसीज हैं, यूरो, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है? इनके सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं based on a lot of factors. Crypto का ये है कि there have been cases where cryptocurrencies have completely devalued and been delisted. या जो crypto के founders हैं, like I said, they've done a little bit of fraud and been naughty. So in essence, it's unregulated. Best way to protect yourself. Is it safe? There are no regulations at the moment. There are no broad global regulations, when it comes to crypto. Just there are certain regulations to do with the stock markets, what information companies can give out, what impression they can give, how they can play with their balance sheets. There's nothing sort of like it's not as regulated in crypto. The other thing the other thing that I don't actually understand as well. It is a currency, obviously. It is, yes. Right, okay. But कहाँ वो use हो रही है currency? It's an alternative currency. I know, it's an alternative currency, but none of the major, there are no major institutions that are actually, Tesla ने कहा था, I don't know if they've कहा है और करा भी है, लेकिन एक ज़माने में हमने सुना था कि Tesla is now going to accept Bitcoin. But I haven't heard anything, or because they announced that, suddenly Bitcoin actually went बिल्कुल. a little up as well. And herein lies the problem why people are unwilling to accept Bitcoin broadly as a form of payment. Because it moves very volatile. Last few months, Bitcoin has kind of been down. Dollar has been a little bit stronger. A lot of people in the Bitcoin industry and were expecting at the end of the year that Bitcoin will shoot up to never before seen highs. And it's going to be brilliant, or uske baad it will fall very suddenly. That never really happened, for whatever reason. Lekin, but when it does, जैसे आप कहते हैं कोई इस तरह का announcement आता है कि somebody will accept it, या कोई bank या कोई country इसको regulate करने की कोशिश कर रहा है और इसको legitimize कर रहा है, then it will move up or down all of a sudden. Lekin at the moment, the problem is it's so volatile. आप कल, for example, आप Bitcoin का payment लेंगे, your money could half in value the next day.
So it doesn't make for a very good, a currency to buy and sell goods. Or you could actually double your money. Or you could double your money. But this is the thing. This is why it's so attractive to speculators and investors. It moves very fast, especially अगर आप Bitcoin का most जो जगह हैं इसीलिए वजह से आप stocks, shares, currencies के अंदर short sell कर सकते हैं. So this means कि currency up जा रहा है तो आप उसमें buy कर सकते हैं. अगर down जा रहा है you can short sell it and make money on the downward movement as well. Where in crypto, it's harder to do this. Most places will let you, the exchanges will let you buy crypto. Not a lot will let you short sell it at the moment. Or जो करते हैं, it is very, very risky. You got to look at आप किसके साथ ये trading करते हैं. Lots of people आपको offer करेंगे कि आप हमारे साथ कर ले, हम आपको short sell करने की opportunity देंगे. But charges normally are very high because it's very risky. लेकिन at the moment, there are some cryptos like Tether, जिनकी price इतनी ज़्यादा move नहीं होती. ठीक है. Sorry, which one is it? There's one Tether USDT. It's more closely the price is more closely linked to dollar, pegged to dollar. So speculation जो Bitcoin के अंदर होती है या बाकी cryptos के अंदर speculation की वजह से up down price जाता है, वो इतना नहीं आपकी exposure. फिर भी थोड़ा up down जाएगा as the price of dollar moves. But there's no real safe. आप safety के बारे में कर रहे हैं. It's one of the reasons why it has so high returns और इतने सारे लोगों ने इसमें invest किया और पैसा भी बनाया in short amount of money क्योंकि it moves a lot because it's unregulated and it isn't 100% safe. लेकिन अब देखें business के अंदर कोई भी चीज़ safe नहीं है. आप कोई भी business कर रहे हैं, आपको कोई guarantee नहीं कि आपके कितने customer आएंगे आपकी दुकान के अंदर, कितनी आपकी sale होएगी. You can just try and do the best you can. So there's no guarantees, but in crypto it's not backed by any regulator or anything like this. अगर आपका कोई fraud करता है, there's not much you can do. Okay, all right, okay. Now, there is one other thing that I wanted to ask you. There's another trend going on. Obviously, a lot to do with the cryptocurrency, okay, where you make your own coins. I mean, and actually, I know a few people that have actually installed this mechanism in their house. Yes. They've attached it to their internet. जो कि unlimited उनके पास वो होता है, and they're making £200-300 or £50-100, £300 per month. Yes. What's that all about? You're talking about mining. Mining. That's what it's called. Yeah, mining crypto. So the way it's the back end of crypto is a lot of coding but the way crypto works. There is a set for example, with Bitcoin, originally the idea was there'll be a set amount of that currency created every day through coding and what they call crypto mining. Now, crypto mining. And essentially what this is आप जैसे आप कह रहे हैं आप अपने कंप्यूटर के ऊपर सेटअप करते हैं और वो बहुत आहिस्ता blockchain के ऊपर it will create crypto coins for you. And there's a limit to how much you can create in a day, how much is available in a day, I mean it's some people के लिए this is the main thing that they do. Crypto के अंदर rather than invest, they'll mine the crypto and do that. This is also something, लेकिन it's a little bit slower. जैसे आप कह रहे हैं you can make a small amount in a month, whereas अगर आप crypto के अंदर you buy some crypto on a crypto exchange, you can see much better returns. Obviously, then you can lose a lot more as well. Crypto mining थोड़ा slower होता है, and you need a bit more technology for this. You need to know a little bit more. You be a bit more tech savvy. लेकिन it is a little bit. There are companies that are actually doing something like this. I mean, I'm not going to specify which ones. Yeah. And again, like I said, if people want more information, because हमारा main काम जो है वो ये है कि एक general advice and to give you a little background in terms of what's actually happening in the market. But if you want more specific advice from Farhan, by all means, do leave your telephone number behind on 0208 662 4550. Or if you have any questions that you want to ask him, and also our email address भी चल रहा है info@ikra.tv. लेकिन ये mining का जो है ना is very interesting. It really is very, very interesting because I actually never thought that there was something like that as well. और apparently ये postcodes के हिसाब से चल रहा है.
or if there's 3 or 4 in your postcode, then the mining becomes slower. Yes. And if there are nobody else in your postcode, then the mining is actually far quick, and there's an opportunity to earn a substantial amount of money, which is. It just depends on your setup, how much processing power and how you sort of go and do the mining. My sort of main forte isn't in the mining itself, but the buying and the selling side of things. Lekin crypto mining is something that लोग काफ़ी देर से करते आ रहे हैं. And जैसे आप कह रहे हैं, the more people around you, that because there's a set amount of crypto available, it can slow down if there's a lot of people doing it. In your area. I mean, uske alawa, there's other things आप crypto के अंदर कर सकते हैं. For example, you can lend crypto to other people on your account. It's a whole new world, crypto trading, and there's so many different cryptocurrencies. जैसे हम पहले कह रहे थे, and some are like Bitcoin. They're the bellwether of the crypto industry. Do you know, there's another problem as well with cryptocurrency. I mean, which is, I don't know, to tell me if I'm wrong or आपके सारा कुछ कंप्यूटर के अंदर होता है. And there have been instances where people have lost their computers. Their Bitcoin is gone, or their what's that all about? Why can't it be in a system where you can actually it's I mean, it can be in a system. Mainly लोग क्या करते हैं, अगर उनके account के अंदर crypto है, for example, ठीक है? So they will keep it on the account for security reasons. They will take it and put the cryptocurrency on a device, their computer, sometimes an external hard drive or a thumb drive, and that can get lost. But equally, अगर आप अपने digital wallet के अंदर रखते हैं, in the ether, technically it could be hacked अगर आपकी security अच्छी नहीं है. So there's risks on both sides of things. It's a bit like money as well. It is. You can also lose your money as well. You can lose your money. आप बैंक के अंदर अपना पैसा रखते हैं, अब तो इतना common नहीं है. लेकिन at one point in time, people used to rob banks, and you could lose your money, and you could put it in your wallet or your piggy bank. घर के अंदर चोरी हो सकता है. So it's different. अब देखें, जब online banking पहले शुरू हुई थी, a lot of people were very ये क्या है, बैंक के अंदर जाना चाहता हूँ, I don't want online. It's faceless, and people didn't trust it, and it's a little bit like that with crypto, because it's all online. People don't know whether it's trustworthy or not, but and so they try and save things on a digital format that they can hold in their hand. लगता है कि ज़्यादा safer है, but if something happens to that. But are there any banks and institutions which actually hold your Bitcoin as well? Because because I mean, look, very, very frankly, I mean that is a bit of a concern as well. Because like I said, people have actually lost their Bitcoin. Absolutely. I mean, there was a story where this chap lost his Bitcoin, and he was, looking for. I think there's a TV series or something like that, or a program, or a film where he actually had Bitcoin on his thing, and it was landed up in the trash place. That's if that happens, it's difficult, but potentially he's a millionaire. Yeah, but he hasn't got it. He's looking for his stick. Yeah, I mean, this can happen. There's no banks at the moment where you can store your crypto on an account. Some banks are trying to come out with their own cryptocurrency where you can do something similar to this. अभी तक किसी ने निकाला नहीं है. When that does happen, there are a couple of big names that are working on this. When that does happen, in theory, then you will have somewhere जहाँ आप अपना crypto, Bitcoin, for example, अगर आपके पास Bitcoin है, you can convert it into the bank's crypto, and it's safe, like in your bank account. आपका पैसा safe है. आजकल ज़्यादा आपका पैसा भी जो बैंक के साथ होता है, वो भी digitally वहाँ पे है, Absolutely. Yeah, so I mean, इस हैसियत से देखा जाए तो crypto isn't that much different to having your money. Banks के पास अक्सर आपका पैसा physically कहीं पड़ा नहीं होता है. ठीक है. एक कॉल पे चलते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम जनाब. जी वालेकुम सलाम. जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी बशीर नाम है मेरा. बशीर भाई, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लंदन से. जी, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द प्रोग्राम. जी, हुक्म बशीर भाई. जी बस अभी प्रोग्राम आपका देख रहा था, और फरहान साहब की बातें और आपके सवालात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये चाहता हूँ कि ये कैसे बिटकॉइन कैसे अपना परचेज कैसे किया जाता है.
पर फरहान आप बताएं। मतलब परचेस today I कैसे किया discussed जाता है it. बिटकॉइन? हाँ बिल्कुल जी, अभी आपको बताते हैं, फरहान आप सो बोलें। बिटकॉइन परचेस करने के दो तीन डिफरेंट तरीके हैं, यानी कि पहली बात तो ये करनी होती है कि बिटकॉइन आप एक एक्सचेंज के ऊपर ख़रीदते हैं। बिटकॉइन के डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं। तो कौन सा सेफेस्ट वे है, कौन सा सेफेस्ट एक्सचेंज है, उसमें अकाउंट कैसे खोले, कैसे उसमें रजिस्टर हों, और फिर उसमें जैसे अभी आपसे बात कर रहे थे आपके ये होस्ट कि आप 50 पाउंड, 100 पाउंड, 20 जी। पाउंड, जबकि बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत सपोज 2500 है, तो आप 50 पाउंड का क्या खरीदेंगे? हाँ, आप स्मॉल अमाउंट्स के अंदर फिर भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी है। तो आपके जितना भी आप ख़रीदना चाहें उसके मुताबिक यू बाय अ फ्रैक्शन ऑफ अ A बिटकॉइन। fraction of that, या okay. यू बाय अ फ्रैक्शन ऑफ इट। तो अगर आप अपना नंबर लीव कर सकते हैं, आई कांट रिकमेंड एनी एक्सचेंजेस जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, बट देयर आर सेवरल एक्सचेंजेस जो काफ़ी पॉपुलर हैं। बट मैं अगेन, अगर आपको अपना नंबर लीव करूं तो कैन यू बिल्कुल, कॉन्टैक्ट मी? we can get in touch and we can have a conversation, we can speak. लेकिन मेन चीज़ है ये सारा ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एक्सचेंजेस के अंदर आप अपना अकाउंट No, खोलते I हैं। know that bit. I know हाँ, that हाँ, bit. And I mean, you sound very logical and क्योंकि मैं सुनता रहा हूँ वकार ज़का और डिफरेंट, और फिर मेरी अपनी भी सर्च रही है, तो I can afford a bit saving to buy. So why not to go ahead with that? So that's why I just wanted to have some information, because I didn't know how can I buy. I've checked on the system as well online, but कुछ मुझे कोई सही वो साउंड नजर नहीं आया। तो you being on very good authentic TV program, and आपके होस्ट जो हैं वो बड़े रेगुलर अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं, and I am watching you first time, so why not to have some information and then proceed according to that. जी बशीर साहब, थैंक यू सो मच। मैं आप अपना टेलीफोन नंबर पीछे छोड़ दें, एंड आई थिंक द बेस्ट वे इज़ कि आपको फरहान फ़ोन करेंगे एंड ही विल लेट यू नो कि व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल वे ऑफ डूइंग दिस। एंड मे बी फरहान से आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आप इनकी हेल्प भी कर दें, इन द सेंस के इनको अगर आप बता दें कि स्टेप बाय स्टेप के किस तरह करना है, तो दैट वुड बी, well, it would be very, very बिल्कुल, nice. we can do this. तो ये we will definitely Farhan will definitely give you a call back. आप अपना टेलीफोन नंबर छोड़ दें। Thank you so much for your call, and उम्मीद है आपसे फिर भी बात होगी, आगे भी बात होगी। थैंक यू जी। अच्छा जी, हम लोग बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे थे, एंड जिस तरह इन्होंने कहा है बशीर साहब ने कि ही वांट्स टू मेक अ लिटिल इन्वेस्टमेंट, जिस तरह वो 10 पाउंड बच गए, 20 पाउंड बच गए, 100 पाउंड बच गए, 1000 पाउंड बच गए, या जो भी है आपकी सेविंग थोड़ी बहुत ही, वो आप अपना बिटकॉइन में डालते रहें, जो कि दिस इज मनी दैट यू डोंट वांट टू यूज, एंड मे बी यू हैव अ 10 ईयर प्रोग्राम और अ 20 ईयर प्रोग्राम। और जिस तरह हमने देखा है ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, as long as they're not a fraudulent one, they actually are performing. They perform very well, and this is how a lot of people get caught up in the fraud. क्योंकि जो main वालीज हैं, Bitcoin and well, the main one is Bitcoin. Already उसकी प्राइस इतनी हाई चली गई है from what it was a few years ago. So जब किसी को नज़र आता है कोई और शुरू कर रही है कोई नया क्रिप्टो and it's worth hardly anything, the same thing goes through your head. अगर मैं अभी खरीद लूँ तो in 5 years it will be worth a lot more. लेकिन this isn't always the case. Like जैसे बिल्कुल जैसे companies हैं जो long established companies हैं that have good fundamentals, and they're a solid company. उसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका टेक्निकली आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन you might not get the kind of returns that you would see in something like crypto. मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा फरहान कि आप जब बशीर भाई से बात करें तो also talk to him about mining as well. Sure. Which is just a couple of mechanisms in your house, and off you go. So it wouldn't be a bad idea to actually. I think most households should actually have something that actually pays them back. Because you've got that situation where solar panels, you can actually sell the electricity back to the to grid. the actual, and that actually makes a lot of difference on your bills. bill, especially आजकल जो utility bills जो हैं, they're going straight through the roof, or everything is becoming so much more expensive. Definitely. So wherever any little thing that can help
I think our viewers should certainly be looking at these things as well, Definitely. which would, in the long run, make thousands of pounds of difference and hopefully savings for yourselves. Acha, right, okay, so cryptocurrency, we've got a certain view on it in terms of what it is and so on and so forth. We understand that not a lot of institutions are actually accepting it, and it's actually mainly being used for trading, buying and selling, and people are actually making money on that front. It is being used, yeah, as a way to make money itself. At the moment. At the moment. Rather than to pay for certain Yes. things, to pay for commodities. Lekin aapne jis tarah kaha tha, Tesla did actually suggest that they would start accepting that. I think they backtracked from that as well, didn't they? Yeah, I mean, it's just, you know, jo pehle kahega ke we will accept it, there'll be a lot of questions that will be asked, and, you know, they may not always have the answers, and the risk is very high as well. But Tesla ka jo founder hai, he often says things like this to move the market apne fayde ke liye. So it could have been that as well, because he's a big holder of crypto himself. Well, we can't actually say that, but the thing is that maybe and maybe not, and I'm pretty sure it's not the situation. No, I'm not accusing him of anything, but I'm just saying, you know, he's one of those people that has the potential to move. He's an influencer. Big influencer. Big okay, influencer. all right, okay. Acha, now, we've spoken a little bit about cryptocurrency and, you know, how volatile that can be, how profitable or non-profitable it can be, and to find the right sort of company, the right sort of cryptocurrency to actually invest in. Sure. We spoke about currency as well, pounds, dollars, and so on and so forth. We also spoke about stocks and shares as well. Okay? Like, primarily what we really need to speak about is actually gold. Sure. Right, okay, because that's, you know, from my point of view and from our viewers' point of view, you know, it's a commodity which, you know, which South Asians especially thrive on. अब gold का थोड़ा सा आप उसकी trading का आप बताएं हमें कि what's the best way forward, how to invest in that, what do we look for, and so on and so forth. Gold as well is traded on a couple of in a couple of different ways. The main way it's traded is against the dollar. It's the global reserve currency. The gold ko treat karna chahiye in the same way as stocks, shares, and currencies, even crypto. I mean, just on a final note on crypto, I'd say for the beginners, the best way to think of crypto is like another commodity, you know, that's priced in dollars. Yeah, okay. Gold is just the same. Now, crypto, in a little bit, it's started to take some of the luster from gold in that पहले होता था कि अगर डॉलर डाउन होता था या ऑयल डाउन होता था then stock markets down थे. Gold was the place जहाँ पे लोग अपना पैसा डालते थे. It was what they call a flight to you know, risk. currency has always been actually backed by gold. Absolutely. ठीक है? Not anymore. I don't think there's enough gold in the world for this now. No. But the essence has always been the gold thing. Yes, because it holds its value in it's obviously a precious metal. Lekin I would just say treat it like anything else, stocks, shares, more like currencies. Because gold ka price is connected to the dollar. It's priced in dollars. Normally hota kya hai ke dollar agar up ja raha ho, then gold will go down. And the reverse, gold if down, dollar is up. And gold trading is mainly done in exactly the same way. Ek cheez ka careful rehna hota hai. A lot of places, you know, will say to you, physical gold के अंदर आप trading करें, हम आपका ये warehouse के अंदर आप अपना gold रखेंगे, we'll give you certificates and stuff. It's good to just be a little bit more careful, stay away from things like this. Gold के अंदर अगर trading करना है, then you know, my recommendation would be to do it in the same way as stocks and shares online. You open an account with somebody, know a little bit about what you're doing. Gold market moves just like currencies. It can move sometimes, you know, very fast. Agar US की कोई economic data बाहर आती है and it's not good, then gold will move, you know, up and dollar will go down. अभी काफ़ी important point है, economically, we're getting to a place where the European Central Bank and the American Central Bank are kind of going in different, their ideologies are a little bit different and going forward for the future. One, the Americans are thinking of removing tapering and some of the stimulus they've been putting into the market to prop it up, and they feel that unki economy is going back onto the right path.
And then there's the European Central Bank, इनको पता नहीं है. Corona has affected it a lot worse. हो सकता है कि कुछ और time के लिए, they'll have to come up with some of the चलो mechanisms hopefully that the they have in corona place. will get to it. फरहान, हमारा अब वक्त ख़त्म हो गया. अच्छा, ठीक है. टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया है. Thank you so much for coming on our show. You're welcome. And explaining what stocks, shares, currency, cryptocurrency, gold, what all these things are. Thank you very much. ठीक है. और नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया. आज थोड़ा सा हमारी बात हुई है जिस तरह आप लोगों के सामने है क्रिप्टो करेंसी की भी. हम लोग फरहान को फिर से वापस लेके आएंगे. And we'll talk a little bit more extensively in regards to which ones are the best ones, कहाँ investment करनी चाहिए, and so on and so forth. मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि blue chip companies के अंदर ही invest करनी चाहिए और safety is paramount. लेकिन it just depends on where you are on the Richter scale as far as taking risks and so on and so forth. बहरहाल anyway, thank you so much for joining us. अगले हफ्ते 6 बजे शार्प आपके पास फिर हाजिर होगा अली काजी और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़.